हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए एंड फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बार बार हमारे जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से, हमारे मसल्स की वीकनेस की वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके बीच का गैप कम होने लगता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्क स्पेस है, जो हमारी डिस्क है, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे वर्टेब्रास को अलग अलग होल्ड नहीं कर पाते। स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली कैन बी सर्वाइकल और लंबर. So in our body, vertebrae are supporting our structure. Basically, our backbone is supporting. So our backbone is supporting our structure, and each vertebra each vertebra has an intervertebral disc in between them. So what happens when there is a muscle weakness? What is the role of our muscles? It holds the whole structure of our body in the right place. And when there is any muscle weakness, what happens is our bones, which are held by the muscle, will get hindered, and it can cause space reduction. That is what happens in that case, wear and tear of joints, which will cause inflammation, pain, redness, irritation. It can also cause irritation of nerve, which can lead to severe tingling and pinpoint pain. Spondylosis can be cervical or lumbar spondylosis. सर्वाइकल जो हमारे नेक के मसल्स को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे नेक एरिया को कवर करता है. देन देयर इज thoracic एंड देन lumbar, एंड obviously there is a sacral one also. So what happens is जब भी हमारे मसल्स वीक होते हैं, हमारे जो बैकबोन है वो हर इसमें वर्टिब्रास होते हैं. हर वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, एंड वो इन वर्टिब्रास को कुशनिंग प्रोवाइड करता है. जब भी अगर कोई जर्की मूवमेंट होता है या कोई भी ऐसी ज़ोर से मूवमेंट होता है जिसमें हमारे एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ने की चांसेस रहते हैं, तो हमारे जो डिस्क है वो उस सारे प्रेशर को, उस फोर्स को झेलता है, एंड एक बहुत ही हमारी मूवमेंट स्मूथ रहे एंड हमारे जॉइंट्स पे, हमारे बोन पर कोई फर्क ना आए, एज इन कोई फ्रैक्चर ना हो. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है. इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग रोज़ एक्सरसाइजेस करें. बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सही एक्सरसाइजेस करें. आप जितना स्ट्रॉन्ग अपने स्ट्रेचर को रखेंगे, अपनी मसल्स को रखेंगे, उतना ही अच्छे से आपकी जो बोन्स हैं वो अपनी प्लेस पर रह पाएंगी, वो वहाँ पे स्टेबल रहेंगी. कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से स्पॉन्डाइलोसिस कॉज होता है. स्पॉन्डाइलोसिस की कॉजेज़ हैं, जैसे कि अगर हम कोई एक मूवमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, इफ देयर इज़ एनी रेपिटेटिव मूवमेंट, any task we are performing again and again. I'll give you one example. Like if I am a desktop person, like I have a desktop job. So what my posture will be like this. I will be writing, I will be typing. So what happens in that case is we develop a posture, because for 9 hours, 8 hours we are on the same laptop or same desk job, and we used to take no breaks and all mostly. So what happens in that case is that we acquire such posture. If we acquire such postures which is not healthy posture, what happens is our muscle used to stay like that. Whenever we have
uh, cross an age limit, and that we attain that posture particularly, what happens is our muscle goes in weakness. Like for example, if I'll be flexing all the time, my neck flexors will be weak and my neck extensors will be tight, so what happens in that case, our extensors will work more and our flexors will work less. It will automatically cause a tension in our extensor muscles, and this will cause a great hampering in our daily activity. So हम लोग अगर इस पोस्चर को नहीं करेक्ट करेंगे, हम लोग नहीं अपनी सिटिंग स्टाइल को करेक्ट करेंगे, तो ये हमें लॉन्ग रन में बहुत पेन देने वाला है। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि हम अगर बहुत टाइम तक किसी पोस्चर में रहते हैं, हमारे मसल्स जो हैं वो टॉट हो जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं। सो इस केस में जब ये स्पैज़म डेवलप होता है तो हमारी नर्व भी वहीं से जा रही है ना, तो वो भी इरिटेट होगी, उसमें भी हमारे दिक्कत प्रॉब्लम होने लगेगी। इट कैन कॉज अ रेडिएटिंग पेन, टिंगलिंग कॉज कर सकता है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्मोकिंग इसका एक कॉज है। इसमें जो पेशेंट स्मोक करता है उनकी जो डिस्क है वो जल्दी डिजेनरेट करती है। एजिंग इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। ऑब्वियसली व्हेन अ पर्सन एजेस, तो धीरे धीरे करके उसकी जो मसल्स हैं वो वीक होती हैं, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिस्क स्पेस रिड्यूस होता है बिकॉज डिस्क जो है वो डिजेनरेट होने लगती है। And obesity is a very big cause. A patient is an overweight and has a very bad posture, will be prone to have this spondylosis. So most of the time what happens is a patient develops a severe pain in his trapezius muscle because it gets taut, and in worst cases what happens is the patient loses its grip. Okay, so that is the case when the disc bulge is more and the patient doesn't have the power in his hands. In that cases, mostly in the lumbar cases, what happens is the patient is unable to walk. They have the radiating pain in the back of the thigh, or it may be in the front of the thigh also. So that pain is unbearable and patient is not able to walk by himself or herself. In these cases, what we used to do is, if we able to diagnose the patient in early stages, it is very beneficial because we can prevent surgery and surgical options. So it is very important that if a patient has pain, they should visit their doctor, their respective doctor and their physiotherapist for same. They get themselves diagnosed and take treatment properly for that case. If a patient is having tightness or spasm in their trapezius muscle or in their associated muscles of neck, they should have that relief. Manual therapy is a very good option in that case. Soft tissue manipulation was a very tremendous result, and one should definitely go for this. They can go for stretching, tissue release, strengthening exercises, isometric exercises initially, and this is must for a patient. Early diagnosis plays a very major role. It can save you from a surgical option. One has to work upon themselves, and timely they should be observing their pain and doing something for that. Whatever your therapist, your physiotherapist, your doctor, whatever they tell you, do that. It will going to benefit you. Don't skip these things because it can cause you major problems. In some cases, when there is a problem for a long run, sometimes patient loses their functions. So it is very important that one should get it treated and regain their function so that they perform their daily activities. Investigation can be done by X-ray for bone, MRI for soft tissue, or CT scan if needed. One can, if there is any nerve impairment, NCV, nerve conduction velocity test can be done. Patient asks, is this PIVD is reversible or not?
I won't say that it is 100% reversible, but yes, if you get a right treatment on right time, it is reversible by few percents, and one can regain their regular activity, their radial activities, and go to their work efficiently. It hampers their efficiency at work because patient having severe ache, and no one can understand the pain they are going through. But one should be very the patient's attendant should be very considerate, and the treating doctor should be very much passionate about the treatment. So I suggest one to opt for a good physiotherapist, to go to a good doctor to get treated for the problem you're having. For radiating pain, nerve mobilization is a good technique to opt for to get treated by, and it has shown very good results. Apart from that, nowadays there are few techniques like cupping, dry needling to break these taut bands. Taping is also used. So there are various techniques one can go for, but the primary thing is a manual therapy, and that's all. I hope this video will help you. I wish you all pain-free life. I hope this video improves your knowledge about these medical things, and give you good information regarding your problem. For any query, you can ask here also and contact us on our Cure Paths website.